I am Nainika with you, and in this session we will discuss about this chapter, that is, does it look the same? So this is class 5 maths NCERT, and now so does it look the same? क्या कुछ सेम जो ये जो दो पिक्चर्स है, डज इट लुक द सेम? दोनों क्या सेम दिखता है? दोनों का सिमेट्री सेम है? सो इन दिस, सो व्हेन यू सी योरसेल्फ इन अ मिरर, डज इट लुक द सेम टू यू? यस, जब हम लोग मिरर में अपने आप को देखते हैं तो क्या हम लोग को सिमिलर हम लोग इमेज देखते हैं? ठीक है, सो येस इन अ plain reflective mirror objects appear exactly the same, and so now we will discuss that is symmetrical shape. What is a symmetrical shape? So if a picture can be divided into two equal parts, okay, if a picture, like this is a picture, this is blue one, okay, so it can be divided, like you are watching that look into the dotted line, okay, red dotted line. So if a picture can be divided into two equal parts, it is called symmetrical shape, and the line which divides it is called the line of symmetry or the mirror line. Okay, next, what do you mean by reflection symmetry? Reflection symmetry is also known as mirror symmetry, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? दोज ऑब्जेक्ट्स और पैटर्न्स में विच वी कैन कट इनटू हाफ्स ऑफ ईच अदर, एंड इन दिस टाइप ऑफ सिमेट्री द लाइन ऑफ सिमेट्री बिहेव्स लाइक अ मिरर. Thus we refer to it as a mirror line because of this behavior, that is reflection symmetry. ठीक है, नेक्स्ट है सिमेट्रिकल शेप. सिमेट्रिकल शेप तो हो गया था, रिफ्लेक्शन सिमेट्री. देन है लीनियर सिमेट्री. व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर सिमेट्री? सो फर्स्ट ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम द मिडल ऑफ द फिगर, दस द टू पार्ट ऑफ इट इज़ रेफर्ड टू एज द मिरर इमेज ऑफ द अदर. मतलब कि एक फिगर है, उसके मिडल से हम कोई लाइन खींचे, ड्रॉ करेंगे, और जो दो पार्ट बचेगा उसको मिरर इमेज बोलेंगे दोनों का. ठीक है, सो दैट इज़ लीनियर सिमेट्री. So reflection symmetry is also known as mirror symmetry. So what we learned already, reflection symmetry, linear symmetry, and now we will know about rotation. What do you mean by rotation? The action or process of rotation, or as if on an axis or center, is termed as the process of rotation. ठीक है, जो रोटेट करती है, जो प्रोसेस है, एक सेंटर में एक एक्सिस है और जो रोटेशन होता है, दैट इज़ रोटेट करती है कोई ऑब्जेक्ट या कुछ on the axis, that is termed as the process of rotation. Next, there are four types of symmetry: translation, glide, rotation and reflection. Translation, glide, rotation and reflection. Okay, these are the types of reflection. So yeah, I think this the top chapter is now clear too. So these are what we have discussed, right? Right from the present. These are the main topics. Okay, and now here many activities are given which you can try on your home, on your own. Okay, in your home, try. That is your homework. So if you face any difficulty in the chapter or any topic, you can ask me in the comment section. Okay, and so guys, please do like, share, subscribe my channel, and thank you.